a day that could have gone this way or that. I'd gone for an expedition and we were at summit camp at 5,600 meters. Just 400 meters short of the summit. 16th was supposed to be the day that we were supposed to stand on top of that mountain, Helu. We spent all night just digging our tents out, making tea. We were in an area where it was a very big possibility that an avalanche would come on us. We were trying to get from our summit camp to our base camp. But why we were able to survive it, I think of the 11 of us, the 8 of us who went to summit camp, none of us can really say. After her safe return to the nearest town of Uttarkashi, Guneet did not go home. Instead, she decided to stay back and volunteer for relief work. Anusha, her batchmate from NIM, Nehru Institute of Mountaineering, flew down from Mumbai and joined Guneet in the relief work. At that point in time, believe me, we had not even planned what are we going to do. All we knew is we have a skill, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम लोग. We started working. First couple of days we volunteered with Red Cross. By the time the Chindri ma'am was here, we worked with her for nearly 2.5 weeks. Once we finished the relief mission and everything, and we sat and thought over, and we said we need to do something more. Guneet and Anusha started Summiting for Hope, an organization to conduct expeditions in the Uttarakhand region to begin with. The idea was to create employment, even if at a small scale, and to plow back any extra money generated through funds for local development. So we put together our expedition. We went up. It was successful. We came down. We were in high spirits. I'd raised about 4.5 lakhs, and I was left with almost about 2 lakhs. They were still undecided on what exactly to do with this money when they had a meeting with Colonel Kotial, principal of Nehru Institute of Mountaineering, the place from where both Anusha and Guneet had done their mountaineering courses. So he said, all right, if you're doing all this, why haven't you thought anything about Mamta? Mamta was a local village girl who had done her advanced mountaineering course along with Anusha and Guneet few years ago. On seeing her potential during that course, Anusha had sponsored her next level of course called the Method of Instruction course. Ever since she did a Method of Instruction course, she's been getting a lot of work. Immediately after that, she's worked with the Tata Adventure Foundation. She's worked with INMI, an organization in Delhi which works with a lot of kids, and they conduct adventure camp for kids. 16th June 2013. The same day that Guneet was trying to get out of her summit camp, risking avalanches, Mamta was out in the mountains guiding one such adventure camp of kids. पूरे पेड़ पत्थर एक साथ जा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि अब ये तुरंत हमें भी भाग ले जाएगा. तो डर अपने नहीं था, डर था उन बच्चों का जो 15-16 साल के बच्चे थे, जो 40 बच्चे थे हमारे पास. उनको फिर हमने ऐसे किया कि इनको पहले एक पैदल का रास्ता है उधर से लेके आए मेन रोड पे, और फिर हमने उनके जब तक गाड़ियाँ आ रही थी तब तक हमने उनके बैग वैग गिला दिए, बच्चों को सेफ जगह पे पहुँचाया. After that, Mamta had to return home to be with her bhabhi who was pregnant. She delivered in the next 2 days. But Mamta wanted to go out there and use her skills in rescuing the thousands who were stranded in that region. तो मुझे ना अजीब सा लग रहा था वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के. मैंने कहा यार मतलब क्या फ़ायदा है हमारा कोर्स करके, मतलब हम अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते, जो जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं वो तो कर सकती हूँ. मैंने फर्स्ट बार अपने घर में झूठ बोला. मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी भी मैं किसी से झूठ नहीं बोली. मैं अपने भाई को बोला कि NIM का फ़ोन आ रहा है NIM से, और उन्होंने बोला कि आपको मनेरी इधर आना है. मैं झूठ बोल रही थी कि NIM के जा रखे, मुझे पता भी नहीं था कि NIM के लोग जा रखे. तो एक कोई और दीदी बैठी हुई थी कजन रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि लड़कियों को जाना अलाउ नहीं है. मैंने कहा कहाँ पे लिखा हुआ कि लड़कियों को जाना अलाउ नहीं है. मैंने कहा वो बेवकूफ़ है NIM के जो ऊपर बैठे. नाल्ड गांव है,
उस गांव में पैदल पहुंचाया भाभी को, कम से कम होगा 8-9 किलोमीटर पैदल पड़ गया। तो बच्चे के साथ उनको उनके मायके में छोड़ा। मैं जब निकली वहाँ से तो सडनली मुझे NIM के सरदार सर मिल गए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं खाना भी अगर नहीं दोगे आप तो चलेगा, दिन में मैं काम करूँगी। फिर तो हम मतलब साथ हो गया था मेरा। फिर हम लोगों ने लोगों को कोशिश की सेफ पहुंचाने की, सेफ जगह। जब हम फॉरनर को निकाल के आए, मैंने उनको कहीं पे मैं अपना हाथ दे रही थी पैर को रखने के लिए, कहीं पे अपना मैं घुटना देख रही थी कि यहाँ पे पैर रखो, कहीं से उनको पीठी में उठा रही थी। तो जब मैं मनेर हेलीपैड में आया तो उस फॉरनर ने अटैची खोली और पैसे ऐसे निकाले कि आप मतलब इनाम के तौर पे या टिप के ना कि आपके लिए आपने हमें सेफ पहुंचा दिया। तो मुझे ना इतना डर लगा कि ये कैसे दे रही मुझे पैसे। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं आ रही आपके पास, और नहीं लिया मैंने ना। मतलब अजीब सा लगा मुझे अंदर से कि क्या सोच रही है मुझे, मैं पैसे के लिए थोड़ी नहीं आ रही यहाँ पे ना। मैंने कहा आपका पैसा अगर आप 4 दिन भूखे रहे वहाँ पे, आपके पैसे काम आए कि नहीं? मैंने कहा तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। Over the next several weeks, Mamta rescued dozens of people and actively participated in the relief work for free. She also worked alongside Guneet and Anusha, but there's something that she never told anyone. That girl, through all this, had not once mentioned that this disaster had affected her as much as it had affected everybody else. All the people we were trying to help, all the people she was helping. The floods had washed away Mamta's house. Her house was gone. You know how people talk and they say, you know, iska bhi, uska bhi, and this and that. So the Gaonwalas told somebody who told an instructor at NIM. And that is how Colonel Kotial came to know about it, and he told us about it. This is 4 months after the disaster. Guneet and Anusha put in the 2 lakh rupees to start building a new house for Mamta. NIM supported them. They had to raise a lot more money to complete the house, and they did. मैंने सोचा था कि मैं एक लकड़ी काट के, बल्लियाँ काट के एक छोटा सा छत बनाऊंगी, ऊपर से तिरपाल डाल दूंगी, घास वास डाल के। टेंशन हो जाता रात को कि भगवान अगला दिन कैसे रहेगा करके। यही होता था कि भगवान अब मैं बना पाऊंगी घर की, नहीं बना पाऊंगी। मुझे ये भी नहीं था पता कि आज ये दिन भी आएगा, मतलब कि हमें मतलब लोग आ रहे हैं मतलब पूछने के लिए कि आपने कैसा काम किया, अपने स्व इच्छा से कर रहे। शायद मुझे अगर ये पता होता कि कोई मेरा नाम लेगा आगे तो शायद नहीं हो पाता इतना अच्छा काम, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। I'm Amrit. I make these short documentary films on a variety of topics, subjects, issues, on startups and NGOs from across India. If you're doing something where I can come and shoot and make a story out of it, or if you want to sponsor one of my films, do reach out to me. You can watch all of my stories on 3minutestories.com. Thank you.